Hello students, continuing in the chapter of current electricity, let us in today's lecture discuss thermal or heating effects of current. Thermal effects of current is also sometimes called Joule's heating. This is also called Joule's heating. Now, first of all, we will derive the basic equation we will be using in this particular chapter. Imagine a situation in which in a conductor you are passing some current. Assume that you have applied a voltage V to this conductor. इस कंडक्टर पे आपने एक वोल्टेज लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस. सो you should understand that in between these 2 points a potential difference V is existing, and this side is at higher potential and this side is at lower potential. जब आप एक कंडक्टर में वोल्टेज इस तरह से लगाएंगे तो ये एंड हायर पोटेंशियल पे है और ये एंड लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा. नाउ Imagine the status of an electron which is randomly moving inside this metal. हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन में होता है. The random motion of electron must have been taking place, but when you have applied the potential, the overall tendency of this electron will be to move to left side. Overall movement will be left side, but mind you, the speed of the electron will remain constant. We have discussed that it is having some drift speed. इसकी कुछ drift speed होती है, वो almost constant होती है. Even if it is moving this side, overall average speed if you see, वो electron की constant ही बनी रहती है. So जितनी speed से electron यहाँ पे है, उतनी ही speed से ये electron यहाँ पे भी पहुंचेगा. But now you see, when you have applied the potential, then you know that in the chapter of electrostatics, you have discussed this kind of equation that whatever is the loss in potential energy of the electron, जब ये electron यहाँ से यहाँ आएगा, तो it is gaining energy in the form of kinetic energy, और इसकी potential energy जो ये Q इंटू V होगी, इसका लॉस होगा. लॉस क्यों होगा? क्योंकि ये लोअर से हायर पोटेंशियल पे जा रहा है और चार्ज नेगेटिव है. अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन होता, बट सिंस दिस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है और वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी चाहिए. बट यहां पे इसकी स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है. काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज का मतलब हुआ कि इसकी स्पीड इंक्रीज करनी चाहिए थी. यू अंडरस्टैंड? वट एवर इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट शुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग कांस्टेंट. देयर इज नो इंक्रीज
इन काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का लॉस तो हुआ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हुआ. अब अगर एनर्जी का गेन नहीं हुआ तो एनर्जी कहां गई? वेयर इज दैट एनर्जी? सो दैट एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट. यू अंडरस्टैंड? Whatever is the potential energy loss of electron, that is not getting converted into kinetic energy, rather that is getting converted into heat. So that is called heating effects of current. Now if you try to write down the expression, you see that heat energy I am writing as energy, that we are saying will be equal to Q into V. जो भी चार्ज है और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उनकी प्रोडक्ट है ये एनर्जी. नाउ इफ एनर्जी इज लाइक दिस, इफ आई आस्क यू व्हाट इज पावर, देन यू विल से पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, इजंट इट? पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम. दैट मीन्स you will write power as energy. This is Q into V, this is Q into V upon time. This is the expression you are acquiring. Now you can say this charge upon time can also be written as current. यहां पे पावर इज इक्वल टू आपने QV बाई T जो लिखा है उसमें Q बाई T करंट के एक्सप्रेशन से रिप्लेस हो सकता है. सो फाइनली आई गॉट द एक्सप्रेशन दैट पावर दैट आई एम इंडिकेटिंग बाई P इज इक्वल टू I. Q बाई T इज I करंट इनटू वोल्टेज. This is the basic equation you have gained for this particular topic. Now you can make further manipulation in this expression. How? You have already studied by Ohm's law that V is equal to I into R, isn't it? आपने डिस्कस किया है कि V is equal to IR होता है. Now let us suppose in the place of this V I write IR. अगर इस V की जगह हम IR लिख दें, then this expression will look like P is equal to I into IR, and that will make it I square R. You understand? आपने P is equal to IV या VI का एक मैनिपुलेशन किया and you got another expression that P is equal to I square R. Another manipulation of this thing is possible. अगर यहां पे I की जगह हम अगर V by R लिख दें, in case I replace I by V by R, then what will you get? You will get V by R into V, and that will make it V square upon R. You see this? So these are the three common expressions for power we will be using. P is equal to VI, P is equal to I square R, P is equal to V square by R. So for your reference, I am writing this formula here, that in this chapter our entire discussion will be revolving around these expressions, that power is equal to VI, or this is equal to V square by R, or this is equal to I square R. This is the basic equation around which our topic of heating effects will be revolving. You understand? P is equal to VI or V square by R or I square R. Whatever may be the situation, accordingly we will be using it. You understand? Now here a basic question arises. Let us suppose in this expression I write P is equal to I square R and P is equal to V square by R. These are the two equations you are having. If you look at this expression says that
when resistance is more, then power consumption will be more. But if you look at this expression, this says that when resistance is less, then power is more. Now which one is right? Whether power is directly proportional to R or power is inversely proportional to resistance? This creates confusion. So roughly we happen to say that this expression you should use when current is constant, and generally current is constant when components are connected in series. जब आपके क्वेश्चन में रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं, देन आप ये इक्वेशन यूज कीजिए. एंड व्हेन वोल्टेज इज कांस्टेंट, देन यू अप्लाई दिस इक्वेशन दैट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. एंड व्हेन इज दैट वोल्टेज कांस्टेंट, then we see that generally whenever things are connected in parallel, then voltage becomes constant. That means आप इस इक्वेशन को तब यूज करिए जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है. यू अंडरस्टैंड? सो आप इस इक्वेशन को तब यूज करें, यूज दिस इक्वेशन when resistors are connected in series. Use this equation in series connection. Our basic idea is that current should be constant, and use this equation parallel connection. Is it clear to you that P is equal to I square R is also valid? It will be valid when current is constant. P is equal to V square by R is also valid when connection is in parallel and voltage is constant. Now let us discuss what is the meaning of rating of a bulb. By rating we mean that if you buy a particular bulb or any electrical equipment, you will find that certain numbers are written on it, that voltage is this, power is this. अगर आप कभी बल्ब परचेज करते हैं तो उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट, 100 वॉट. Now what is the meaning of all these things? That is called rating of a bulb. So let us discuss what is the meaning of rating of a bulb. Let us discuss meaning of rating of a bulb. Meaning of rating of a bulb. Let us take a common example in which the bulb is of 220 volt, 100 watt. आपने जो बल्ब परचेज किया है उसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट एंड 100 watt. Remember that once a bulb is manufactured, एक बार एक बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग हो गई तो उसके अंदर जो फिलामेंट है उसकी लेंथ कांस्टेंट हो गई. The length of the filament used inside a bulb, that has become constant. So overall the resistance of the bulb has become constant. This is first thing you have to keep in your mind. And this bulb is being used in household connections. हमारे घर के कनेक्शंस में ये यूज होगा. कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि घर की कनेक्शन में सारी कंपोनेंट्स पैरेलल में लगाए जाते हैं. ऑल दी स्विचेस, ऑल दी कंपोनेंट्स यू सी इन अवर हाउसहोल्ड अफेयर, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. नाउ इन पैरेलल व्हाट इज दैट क्वांटिटी व्हिच इज कांस्टेंट? दैट इज वोल्टेज. अगर कनेक्शन पैरेलल में है तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है? वोल्टेज. देयरफॉर it will be advisable that you use the equation P is equal to V square by R. आप यहां पे I square R यूज नहीं करेंगे. Why not? Because हाउसहोल्ड कनेक्शन में करंट कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज कांस्टेंट है. Since the voltage is constant, so I am using this equation. Now let us discuss what is the meaning of this rating. पहली मीनिंग यह है that resistance of the bulb is constant.
resistance of the bulb is constant, आइडियली ये कांस्टेंट होगा, बिकॉज हमने ये भी डिस्कस किया है कि जैसे जैसे रेजिस्टर का टेम्परेचर चेंज होता है इसकी रेजिस्टेंस भी चेंज होगी. बट ऑल दीज क्वेश्चंस वी डिस्कस दे आर आइडियल क्वेश्चंस. सो आइडियली यू विल अज्यूम दैट जो बल्ब आपने परचेज कर लिया है, द बल्ब विच यू हैव, इट हैज कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड उसकी वैल्यू V स्क्वायर बाय P एक्सप्रेशन यूज करके निकाली जाएगी. यू विल बी यूजिंग द इक्वेशन R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P. ये P कहां से आया, ये एक्सप्रेशन कहां से आया, वही P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R विच यू आर यूजिंग. उसी एक्सप्रेशन को यूज करके हमने यहां पे R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P लिखा है. नाउ इफ आई अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, देन R इज इक्वल टू वोल्टेज रेटिंग आपको दी गई है 220 वोल्ट. दैट मीन्स इट इज 220 whole square divided by power is 100 watt, and that makes it 484 ohm. That makes it 484 ohm. That means in case you have a bulb of rating 220 volt and 100 watt, then it has a fixed resistance and that is 484, और वो आपके पूरे क्वेश्चन में वैल्यू इसकी चेंज नहीं करेगी. रेजिस्टेंस बल्ब का हमेशा कांस्टेंट लिया जाएगा. नाउ नेक्स्ट मीनिंग ऑफ दिस रेटिंग इज द रेटिंग 220 वोल्ट 100 वाट विच यू हैव रिटन. इट्स नेक्स्ट मीनिंग इज दैट मैक्सिमम वोल्टेज यू शुड अप्लाई शुड नॉट एक्सीड 220 वोल्ट. जो बल्ब आपने 220 वोल्ट 100 वाट का लिया है, इसका मीनिंग है कि आप इस पे कभी भी 220 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई ना करें. कम कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई लेसर वोल्टेज, लेकिन ज्यादा वोल्टेज अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये बल्ब फ्यूज कर जाएगा. द मैक्सिमम वोल्टेज यू कैन अप्लाई हियर इज ओनली 220 वोल्ट. सो आई एम राइटिंग मैक्सिमम वोल्टेज that can be applied, maximum voltage that can be applied should not be more than 220 volt. You understand? It should not be more than 220 volt. लेस आप अप्लाई कर सकते हैं. नाउ थर्ड थिंग which this 100 watt expression says is that the maximum power this bulb can consume is 100 watt. ये बल्ब मैक्सिमम 100 watt कंज्यूम कर सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पे कम वोल्टेज लगाएंगे तो ये पावर भी कम कंज्यूम करेगा. 100 watt does not mean that all the time it will be consuming 100 watt. In case the voltage is 220 volt applied, then it will be consuming 100 watt. But in case you will be applying a lesser voltage, then it will be consuming a power of lesser than 100 watt, but never more than 100 watt. You understand? So third meaning is that power consumed by this bulb is 100 watt or less. But never more. Never more. At this particular juncture, let me ask you a question that आपको कहा गया कि जो बल्ब के ऊपर वोल्टेज हमने लगाया है वो 220 नहीं, इसका हाफ है, 110 वोल्ट हमने लगाया है. Assume that we ask you a question that the voltage we have applied to this bulb is not 220, rather it is half of that, that is 110 volt. Now what is the power it is consuming?
then you see you have to go by this expression that P is equal to V square by R. अगर आपने वोल्टेज हाफ कर दी है, तो पावर कंज्यूम्ड 1/4 हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? पावर कंज्यूम 1/4 का मतलब हुआ कि अब ये सिर्फ 25 वॉट कंज्यूम करेगा. यू अंडरस्टैंड? इन केस यू अप्लाई अ वोल्टेज 110 on this bulb, then it will be consuming power 1/4 of that. Why 1/4? Because voltage is half, so square of that is 1/4. Resistance is remaining constant, so power consumed will be simply 25 watt. And the final thing you should understand that the maximum current, if you extend this equation, you can use it as VI also. I am not using I square R, I am using VI because V is constant. So this equation can also be used in this connection. So the fourth thing you are concluding from this 220 volt 100 watt is that maximum current that can be passed into this bulb is I, that is current. From this expression, I will become equal to P upon V. So the maximum current that can be passed into this bulb is I is equal to P upon V. For this particular example, power is 100 watts, so 100 I am writing here, and voltage is 220, so this is 220, and that makes it 5/11 एम्पियर. आप इससे ज्यादा करंट इस बल्ब में पास ना करें, कम कर सकते हैं, ज्यादा करेंगे तो बल्ब फ्यूज कर जाएगा. As we said, if you are applying voltage more than 220 volt, then the bulb will fuse. Indirectly, we are trying to say that if you are applying a current more than 5/11 ampere, then this bulb will fuse. So these are the four conclusions you can draw from this meaning of 220 volt and 100 watt. What are those meanings? Meanings are that the resistance of the bulb remains constant. You can calculate the value of that. Second thing, you understand that maximum voltage which you can apply, that is 220 volt. Third thing, you understand that the maximum power it can consume is 100 watt. It can consume 100 watt or less depending on whether you applied 220 volt or less. And fourth and final thing you can conclude is that the maximum current which can be allowed in this bulb is 5/11 ampere, that is P by V. Not more than that. You can apply lesser current, but not a current more than this much. Clear? Now let us discuss the household connections. What are the factors involved there?